Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of symbols. What is symbols or what are symbols? Elements are represented by symbols which are abbreviation for the name of elements. सिंबल्स आपके पास वो कहलाते हैं जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कुछ एब्रीवेशन लिख बता दिए जाते हैं। मीन्स जैसे हाइड्रोजन है उसका एच बता दिया जाता है, तो एब्रीवेशन जो होते हैं आपके पास वो हमारे पास सिंबल्स कहलाते हैं। नाउ वो डिस्कस ए सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज। एग्जाम्पल, H represented for hydrogen and N represented nitrogen and Na is represented by sodiums। मीन्स जो H है हाइड्रोजन का है, N नाइट्रोजन को डोनेट करता है एंड Na सोडियम को डोनेट करता है आपके पास। सिमिलरली वो डिस्कस द टर्म ऑफ वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? It is combining capacity of an element with other elements. It depends upon the number of electrons in the outermost shell. वैलेंसी जो होती है ना आपके पास किसी भी एटम की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उस पर वैलेंसी आपकी डिपेंड करती है। और जितने भी बॉन्ड बनाते हैं ना कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ, उसमें वैलेंसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसमें ये होता है कि जैसे हाइड्रोजन है, अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ वैलेंसी। HCl, NH3 एंड CH4, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एंड मीथेन। Valency of chlorine is 1 and valency of hydrogen is also 1. Valency of nitrogen is 3 and valency of carbon is 4. Hydrogen bond only one bond with chlorine, that means hydrogen has only one valency. Similarly, chlorine has only one bond with hydrogen, that's why valency of chlorine is only 1. And nitrogen has 3 bonds on 3 with 3 hydrogens respectively, means nitrogen has also 3 valency. And carbon make 4 bond with 4 hydrogen atoms, means single carbon make 4 bonds, means carbon has 4 valency. Now we discuss the periodic table. Now we understand this topic with the help of periodic table. Firstly, first group of periodic table: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and tritium. And second group: beryllium, magnesium, calcium, so on. And third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8 groups of elements of periodic table. And we discuss the first 3 members or first 3 groups of periodic table. First, atoms of sodium, atom of magnesium and atom of aluminium have 1, 2, 3 electrons. Means first group means all atoms of first group have only 1 electron in valence shell, make just only 1 bond with other atoms of first group elements. And similarly, second groups of elements have 2 electrons in valence shell and the 2 bond makes with other atoms with second groups of elements. Similarly, third groups have 3 electrons in valence shell and make new bond 3. And valency have sodium is 1 and magnesium is 2 and aluminium is 3. Similarly, we discuss the first point. Elements in their valence shell respectively, they lose their electron to have valency 1, 2 and 3. We discuss the fourth chapter. We previously discussed the fourth chapter. What is octet and duplet rule? Octet rule means that have complete 8 electrons in their valence shell. Similarly, sodium, magnesium and aluminium. Sodium has just only 1 electron in their valence shell.
And if we follow the octet rule, sodium has vacancy of 7 electrons, means if sodium has gained 7 electrons to complete this octet, but sodium have low ionization energy, low electronegativity value, that's why sodium does not gain 7 electrons. That's why sodium has lose their 1 electron and make a bond with other atoms. That's why the sodium has only 1 valency. Similarly, magnesium has 2 electrons in their valence shell and does not gain 6 electrons to complete their octet. That's why magnesium is also lose their 2 electrons and make a 2 new bonds, and that's why its valency is 2. Similarly, aluminium is also case in this process. And we discuss the second point, atoms of nitrogen, oxygen and fluorine 5, 6, 7 in their valence shell electrons respectively. The electrons okay, 5 group elements means total number of elements in fifth group of periodic table have 5 electrons in valence shell. Similarly, 6 groups of members have also 6 electrons in their valence shell, and 7 groups of members have also 7 electrons in their valence shell. If we discuss the fifth group of periodic table, nitrogen has 5 electrons in valence shell and just 3 electrons remaining to complete its octet. That's why nitrogen has 3 electrons gained to other atom and make a 3 new bond, means nitrogen have 3 valency. Similarly, 6 group of members, oxygen has 6 electrons in their valence shell and have great ability to attract electrons, means have high greater of electronegativity value. Oxygen has just remaining 2 electrons to complete its octet, and that's why similarly to like this nitrogen, oxygen has also gained 2 electrons to make 2 new bonds. And fluorine has also just 1 electrons remaining in their valence shell to complete its octet. Similarly, fluorine is also 1 electron gained to complete its octet, and that's why they gain 3 to 1 electrons, means 3, 2 and 1 electrons to complete their octet. They show valency 3 to 1. Now the question is raised, sodium, magnesium and aluminium 1, 2, 3 electrons valency, and same 3 to 1 valency of nitrogen, oxygen and fluorine. And now the question is raised, how comparison in different types of atoms. Nitrogen has 3 electrons gains, means the valency has -3, either -3. Similarly, aluminium has 3 electrons lose, that's the valency is +3. That are the comparisons of two atoms. Okay, and we discuss the third point, atoms of carbon, silicon have electrons in valence shell. They do not lose or gain electrons, but sharing of electrons, they show valency is 4. Now we discuss the fourth members of groups in periodic table. Carbon has 4 electrons in their valence shell, and the remaining electrons to complete its octet is also 4. Now the carbons do not gain electrons. Instead, carbon has sharing electrons with other atoms to make a new bond. That's why carbon has 4 valency. Similarly, silicon is also procedure like carbon. Now we have finished this topic. Now we discuss in Urdu. अब देखें, आपके पास हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं. ठीक है, जो पहले 3 आपके पास ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के,
हाइड्रोजन, लिथियम जैसे सोडियम आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप है, मीन्स इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके 2 है, इनके 3 है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मीन्स जो आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि जब भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तब भी वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए इधर हम हाइड्रोजन, लिथियम, अगर सोडियम की बात करते हैं, सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए। तो इसी वजह से 7 तो ले नहीं सकते, इसी वजह से 1 दे देते हैं, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी 1 होती है। सिमिलरली इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लें ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। 6 नहीं ले सकते, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, डेट्स वाई ये लूज़ कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सिमिलरली ये एलुमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसके लिए मुश्किल होता है। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज 5th ग्रुप का आपके पास ये मेंबर है इन पीरियोडिक टेबल में। एंड नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, इसकी वजह से इसके लिए 3 लेना इजी है, 5 के ना डोनेट करना डिफ़िकल्टी होती है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी अब 3 है। इसी तरीके ऑक्सीजन की 2 एंड फ्लोरीन की 1 है। एंड हम बात करते हैं कि देखें आपके पास एलुमिनियम की भी वैलेंसी 3 है एंड नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 है, तो हम इनमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन ऐसे करते हैं, जब भी एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसकी वैलेंसी पे आ जाता है नेगेटिव, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है कोई भी एटम उस पर आ जाता है पॉजिटिव। तो एलुमिनियम हैव पॉजिटिव 3 वैलेंसी एंड नाइट्रोजन हैव नेगेटिव 3 वैलेंसी। एंड वो डिस्कस द 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मीन्स कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने वैलेंस शेल में। तो कार्बन के पास अब देखें 4 कार्बन देगा या लेगा, उसके दोनों की वैल्यूज सेम है, तो इसी वजह से ना ही तो कार्बन देता है ना ही तो लेता है, बल्कि वो शेयरिंग कर लेता है। जैसे हमने इधर देखा कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने शेयरिंग किए हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 होती है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव फिनिश दिस टॉपिक, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।